My dear students, we are discussing fundamental right, freedom of speech, expression and press. It is an inalienable right of every citizen of Pakistan कि वो अपनी convictions को, अपनी opinions को दूसरों के साथ शेयर कर सके। लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी कहता है कि ये जो राइट है, it is subject to certain reasonable restrictions. ये नहीं है कि ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट राइट है, बल्कि ये जो राइट है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर हमने ये देखना है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी रीजनेबलनेस का क्या क्राइटेरिया है और इनको कैसे लॉजिकल, सेंसिबल और रैशनल डिक्लेयर किया जाता है। आइए इस हेडिंग को देखते हैं, रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस on freedom of speech and expression. My dear students, the freedom of speech and expression, including the liberty of the press under Pakistan Constitution, is subject to any reasonable restrictions that may be imposed by law in the interest of glory of Islam, the security of Pakistan, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. Freedom of speech and expression, including the liberty of the press, जो है ये subject to reasonable restrictions है जो कि government impose कर सकती है, और वो restrictions जो हैं वो relate कर सकती हैं with the glory of Islam, security of Pakistan, friendly relations with foreign states, public order, decency or like things. Reasonable restriction कैसे होगी? Reasonable restrictions under these heads can be imposed only by a duly enacted law and not by executive action. यहां पर यह बात बड़ी क्लियर बताई जा रही है कि ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी वो एग्जेक्टिव एक्शन से नहीं लगेंगी बल्कि वो एनेक्टेड लॉज के जरिए से लगेंगी। एनेक्टेड लॉज हम किसे कहते हैं? ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो बनाए, हम उसको एनेक्टेड लॉ कहते हैं। हमारे पास क्या टेस्ट है कि डेवलप किया जा सके कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इस राइट पे लगी है वो रीजनेबल है? इस जिमन में हम देखते हैं कि एन एब्सोल्यूट टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी लेड डाउन, कि ये बात कि एक कतई टेस्ट एज टू एस्टैब्लिश रीजनेबलनेस ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो है वो डेवलप किया जा सके। ये बिल्कुल मुश्किल काम है और कोई कतई टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, इन नवाबजादा रसूलुल्लाह खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, द लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड दैट freedom of speech and press is not absolute at all times and in all circumstances, and it does not mean that one can talk of where, when and how one chooses. Dear students, the state can impose reasonable restrictions on the freedom of speech in the interest of friendly relations with foreign state. It is a recognized principle of international law that states in their relation with other states are responsible for the acts committed by persons within their jurisdiction. Dear students, in accordance with this principle, the most modern systems of law have made provisions for the punishment of libel against the heads of foreign states. My dear students, the English common law punishes such libel on the ground that they imperil the peaceful relationship of Her Majesty
with foreign states. A law which makes it an offense to publish any libel tending to degrade or expose to hatred or contempt any foreign prince, ambassador or other foreign dignitaries will fall within this expression and will be held valid provided that the restrictions are not unreasonable. Dear students, the freedom of speech and expression does not extend to indecent or immoral publications and utterances, but as these concepts of decency and morality differ historically and geographically, the court must decide the matter in the light of the existing and generally accepted notions of decency and morality in a given society.